Why has Manipur, with its population, Meitei, Kuki, Naga population, regarding allocation of land, had to have to resort to this present crisis starting from 3rd of May. Now, be it whichever form, whichever whoever was ruling the state back then, nobody wanted to pave a way to a fruitful or to a very much feasible solution, so that land allocation between the valley people and the hill people could be sorted out. Instead, what happened, and which led to the culmination of 3rd of May, I would put it that way, is that first of all, the present state government, what they did was, in Manipur we have a system of land regulation and land acts called the MLR and LR Act, in which wherein non-tribals are constitutionally not able to purchase land belonging to the tribals in the hills. MLR and LR Act is not enforceable in the hills. So what the government did was that when such provision is there in the hills, they allowed the hill people to get their pata registered in the valley revenue offices. Something illegal, but they allowed it to happen through the course of many years, 10, 20, 30, 40 years. So finally, what they did was that, being registered in the valley revenue offices, the state government suddenly claimed that all these registered lands now come under revenue section, and therefore either Imphal East, Imphal West, Thobal, these revenue districts. That was the first way of them trying to get access to this tribal land. Secondly, what they did was that, through various forest acts, they declared many parts of these hill areas to come under reserve forests and protected forests, by way of which they started to evict villages. The government tried to evict villages. Third point, yes, they are cultivators of poppy across every community in Manipur. That is there. But the state government, under the leadership of N. Biren Singh, specifically targeted the Kuki population and termed them as poppy cultivators and narco terrorists. Point number 4. When you spoke about infiltration, Rami, when you spoke about infiltration, I agree with you that there is infiltration from outside within the state of Manipur. But you're forgetting, when you mention cookies infiltrating, either you forgot or you deliberately omitted. I'm not sure about that. But infiltration is across all Mr. Kipgen, communities. I am not Rami's lawyer, but I know her well enough to say that there is no malicious intent. And in my, at least, we should have that for each other. We respect each other's extreme opinion, Mr. Kipgen. I never stop anyone. But ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है. Everyone is entitled to their opinion. मैंने तो आपको एक बार डिस्टर्ब नहीं किया. आपने कितनी सारी चीजें बोली. कोई दूसरा अगर इस वक्त चैनल पे मेथी भाई होता, नाराज हो जाता. I was hoping that it would not be a malicious intent. I'm sure it is very, So infiltration was also there across all communities, and however, even this, the state government would like to put infiltration or illegal migration as one of the factors for population increase among the, especially Mr. Kipgen, I should say one thing. I completely agree when people say कि outsider है, poppy cultivator. This narrative is incorrect. Cookies are not outsiders; they are Indians. वैसे the other thing is कि just because Meithis are in majority does not make them majoritarian fundamentalist or they do majoritarian politics. कोशिश यही है कि हमको ये बाइनरी तोड़ने की जरूरत है. Cookies are not poppy cultivators, they are not outsiders, they are Indian citizens. Indian है. Even Meithis are, despite being in majority, does not make them majoritarian. Not पूरी कुकी Maithi community को आप ये नहीं कह सकते majoritarian politics कर रही है. So my whole idea of doing this today, 8 hour long, sir, this has been 8, this is a continuous coverage, sir, is to ensure that people get to speak what they are feeling deep inside.
and they get to speak continuously every day till there is a resolution. भाई बातचीत तो कहीं से शुरू होनी चाहिए, चाहे हमारे यहाँ से शुरू हो जाए, टीवी से Thank शुरू you हो for this जाए, panel. किसी चीज से Thank भी you. शुरू हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, इंटेंशन सही होना चाहिए ना. So that is how both me, my input editor Brijesh, and I decided every day 2 hours. Sometimes it becomes 8 hours, Mr. Kipgen. Sometimes it becomes 6 hours. But the whole idea is to do this. And I only say, and the only thing I think, Kartikeya, sorry for butting in, is I can say is Mr. Kipgen is here, and in the heat of the moment, or people think that X is supporting Y or all. But one thing I can say for sure, sir, is like had the coverage been for 2-3 days, you can definitely accuse us of bias towards X or Y or anybody. But if you look at our 2 months plus coverage of Manipur, trust me, all views are incorporated and nobody is interrupted. Very rarely you will see that a person is given 3 to 4 minutes to articulate his view, and we always go back to the guest, and we never discriminate or even made an attempt to this thing. We don't understand Manipur and its complexities like you do, or like Madam does, or Rami does. You guys are on the ground, the scholars and everything, and we are not ashamed of the fact. I think that puts us in a unique situation to assess the thing. Yes, barring that, I mean, but please don't think even for a second that anybody is trying to take side of anybody and all. We allowed the other lady who was there, and she was constantly taking on Rami, and nobody even for once tried to stop her from articulating her view, which was absolutely contrarian. Absolutely right. Absolutely right. Let's just play some more bites, some more reactions. राहुल गांधी जी, मणिपुर 2 महीने से जल रहा है. इस देश के प्रधानमंत्री के पास न फुर्सत है, न वक्त है, न शांति की अपील करिए, न हिंसा की भर्त्सना करिए. राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे थे. वो क्यों जा रहे थे? वो लोगों के आंसू पोंछने, उनको गले लगाने, उनसे मोहब्बत जताने, उनको ढांढस बनाने, उनका विश्वास जगाने जा रहे थे. उनको रोकने से साबित कर दिया है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से घबराता है. राहुल गांधी जी के काफिले को 20 किलोमीटर बाद इंफाल एयरपोर्ट के रोक दिया गया. उसी प्रशासन ने उनको जाने की अनुमति दी थी, उसी प्रशासन ने उनको रोक दिया, और रोकने के बाद उनसे कहा गया अब आप हवाई जहाज से जाइए. जहां पर उनको रोका गया वहां पर गांव के लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि उनको भी लगता है कि 2 महीने से स्थिति बदहाल है, संभल नहीं रही है. कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमसे हमारी टोह लेने आया है, हमसे हमारा हालचाल पूछने आया है, उसके खिलाफ सरकार डटी हुई है. तो मणिपुर के गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए. वो कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, वो मणिपुर के लोग हैं. उन पर टीयर गैस और कैनन चलाए गए. क्यों चलाया गया टीयर कैनन? क्यों टीयर आंसू गैस के गोले दागे गए उन पर? ये हमारे लोग हैं, ये विस्थापित हैं. 130 लोगों की मौत हो गई है. कहां पर आपको उनका ढांढस बनाना चाहिए, कहां पर आप उन्हीं को विलन बना रहे हैं. और राहुल गांधी जी को आप रोक नहीं सकते. उन्होंने मन बना लिया है, वो जाएंगे जरूर. जाना तो प्रधानमंत्री को चाहिए था, लेकिन वो अपना बूथ सबसे मजबूत करने में तुले हुए हैं. तो मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी जी को रोककर एक बार फिर से सरकार ने अपना असली चाल चरित्र और चेहरा और अपना नफरती एजेंडा पूरी तरह से दिखा दिया है. शुरू में हुए वैली और हिल्स के बीच में, फुट हिल्स में ज्यादा कन्फाइन थे, यूजिंग इवन प्रिमिटिव वेपन्स. नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज. देन another stage, ID even starts being blasted along the Tidim road just a few days back. And seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Rather take action. Rather go to Churchanpur, the destination by helicopter. That's it. Simple as that. If our suggestion, if our security angle taken into consideration, and on the ground report given to the police headquarters, and police headquarters accordingly giving the advice to take to the VIPs to go to Churchanpur by helicopter. If this is not taken, somehow rush or come up to here and we stop here. If this is taken, otherwise it's not our problem. Thank you. हम ये कहना चाहता है कि राहुल गांधी को चुरचांदपुर में जाने दे. वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर प्रजा को क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है. कि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया. Why they are blocking the road? Why? I want to ask to the government why they are blocking the road, Rahul Gandhi ji. These are the latest visuals which are coming from news agency.
I think these are coming from Manipur, if I am not wrong. ये लोकेशन विष्णुपुर की है. Just to tell our guests, it's a rolling coverage on Manipur. It's a rolling coverage of Manipur. These are visuals from Vishnupur. And let me tell you, Vishnupur has been area where things have happened. And this is where Rahul Gandhi was stopped. Please put the location on. These are the area. These are the visuals of Vishnupur. You know, I just don't know what to say here. You know, it really baffles me in a way, and I would like to get our guest in. निशिकांत जी, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही है, बताइए. स्टेट गवर्नमेंट से. निशिकांत जी, एक स्टेट ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही है, पुलिस ने रास्ता रोक दिया है. मतलब ये क्या है? If politicians cannot move, who will move? No. What happened was that सुबह ना एक जगह है, उसका नाम है सेराम. सेराम में 2 मैतेई मारे गए और 4 इंजर्ड हो गए. तो उसको लेकर काफी डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया. दुकानें बंद हो गई, मार्केटें बंद हो गई. So there is disturbance everywhere. Now everybody is asking the government, where is the peace? Because the peace, they were expecting peace in Nepal, and Rahul Gandhi was going to Chandrapur, and I think on the way in Bishenpur there were a lot of disturbances. In fact, one of the escorts has been hurt because of the tear gas shelling. So now I think Rahul Gandhi is going to be taking a chopper to Chandrapur. So can you just tell me what happened? Why is this being blocked? Why are women out in Vishnupur? These are the latest visuals, sir. Yes, I said because today early in the morning in Seram, 2 Maitais got shot. And see, it is a reaction to that. 4 Maitais are injured. It's a reaction to that. So Bishenpur, I mean, news को जाते फैलते देर नहीं लगती. फोन पे जाता है सब कुछ. But disturbance in the valley. निशिकांत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा बाहर की तरफ आ जाइए. आपकी फोन की आवाज कट के आ रही है. थोड़ा बाहर की तरफ आके बात कीजिए. अच्छा, मैं आ रहा हूँ बाहर. हाँ, आप बोलते हुए आइए. और मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं. निशिकांत जी, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. ये जो you know, I mean, the fact is that the state government and the state police machinery would be aware of this incident which happened in the wee hours of this morning. Why did they allow Rahul Gandhi to travel from Imphal to Bishnupur and then stop and turn back the cavalcade? I think they would be pretty much aware by the time Rahul Gandhi landed in Imphal. So why this political? No. There's no politics to it. I'm sure that they must not have expected that kind of a disturbance in Bishenpur. But because after the Honorable Chief Minister met the Honorable Home Minister, they were assured of peace in the valley and in the hills. So because of these 2 deaths, I think it just people have got too disturbed, too emotional. People have, started shutting doors. I think it just spread like that. Nothing like that was expected in the morning, early in the morning. Congress should have expected that because you see, it is not in the police's hands कि कौन कहाँ वो mob शुरू हो जाएगा. So वहाँ बिशनपुर में तो suddenly all over the valley actually there's disturbance right now. So I'm told that Mr. Rahul Gandhi will be taking the chopper to Chandrapur. निशिकांत जी, आप जरा एक मिनट हमारे साथ रुकिए. वो पुराने बारे में चाहूंगा कि विजुअल्स दोबारा से चलाएं, और उसका जो बिष्णुपुर वाले हैं और जो बिष्णुपुर वाले जो विजुअल्स हैं उसका हम आपको नेट दोबारा दिखाएंगे. ये एग्जैक्टली उस स्पॉट से विजुअल्स थे जहां लड़ाई हुई थी. On this, I would like to get Dr. Seram Rojesh in. Dr. Seram Rojesh, your first comments on the visuals we played out from Bishnupur. So, hello, am I audible? Yes, you are audible. Yeah, as Sri Nisikant have already said that in the Sanjem, Chirang, and that area in the morning, it was told that there was a attack from other side. I'll just stop you for a minute, sir. I'll just stop you for a minute. These are the visuals. आप सुनिए उनको. इनका मैं नया टिपर करा रहा हूँ. आप एक ही सुनिए. कापो. सुनो अबे कापो. थोड़ा उन्हें तो काप के. नहीं उसको खींचे थोड़ा तो खींचे. Please.
these are the latest visuals. These are the latest visuals. Yes, yes. Dr. Romesh? Well, I would like to add one more information which has come in Kartikeya by sources. The Spare Corps Indian Army has released a message which says that firing by armed rioters toward Harothel village KPI district, unprovoked firing by armed rioters toward village Harothel commenced at 5:30 a.m. Own troops deployed in the area immediately mobilized to prevent escalation of situation. This is the same area which we're talking about. While en route to our column drew effective fire from armed rioters, own troops responded in a calibrated manner to prevent any collateral damage. Swift action by troops resulted in cessation in firing. Additional columns moved to the area. Unconfirmed reports indicate some casualties. Build-up of large crowd in the area also reported. Situation being closely monitored and further details till now. This is exactly what Nishikantji was saying, that it looks like 2 people have died, and this is a tweet by Spare Corps Indian Army which says that unprovoked firing happened at 5:30 a.m. There are casualties. They say that unconfirmed reports indicate some casualties. Build-up of large crowd in the area also reported. Situation being closely monitored and further details will follow. So the situation is going to exacerbate, Kartikeya, There's a as we natak, say. there's a natak here. Okay, just do the natak. 我想真的吧，这个。Nishikantji, am I audible to you, Nishikantji? Yes, you are. Nishikantji, it's a pretty stiff situation, I must say, after watching the visuals. I must concede it is pretty tense in Vishnupur. It is. Because you see, after the Home Minister met the Honorable Chief Minister, everybody thought peace would surely come. But then again, there have been news, I don't know how far I am right, that a few truckloads full of arms, full of guns, maybe, like AKs and all, have come across the border from Myanmar. I don't know how far it's correct, but this has been going on for the last 1-2 days. So naturally, they have come not to say Diwali. So this is bound to happen, and people were not expecting it, but in this Sanjan Serang area, that two Metis could get killed and 4 injured. So that reaction has been very strong and very sad. Manipur is totally on the edge, and we've been on the edge for too long. But Nishikantji, this incident also blows a hole into the assertion which was made by N. Biren Singh, the Chief Minister, which was reported day before yesterday, that he has told Home Minister Amit Shah that no violent situations, major violent situation has been in the state of Manipur for quite a while now. This visuals on the screen completely. Everybody was hoping for the best, and until this morning, what happened? 2 people were shot dead. So anyway, Major, you see, you have to ensure that there's no firing in the thing from the hilltop and the foothills. It has to be ensured. Then only things will calm down.
And you have to realize that this is becoming a real national security issue. You have truckloads of, guns and, arms getting into the country. That's risky and extremely dangerous. I mean, action needs to be taken fast, quick, and very firm. Do you think now Biren Singh should be changed, sir? Well, I'm not going to comment on that because I'm just an independent MLA. I mean, that I leave that to the wisdom of the government in Delhi. That is why I asked this question to you, because you're non-aligned. You can have a neutral voice. No, I do support the government, but what I'm trying to say is that I would leave to the wisdom of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. But Nishikantji, how long before anybody takes a concrete decision? First of all, no, even one day is too long, yaar. Exactly. So, that's it. मैं चाहूंगा कि ये पूरे के पूरे विजुअल्स फॉर द व्यूअर्स ऑफ द न्यूज़ 9 दोबारा से पूरे नेट के साथ सुनाई जाए, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन बिष्णुपुर. देन आई विल कम टू निशिकांत जी. प्लीज बेयर विथ मी फॉर 2 minutes. Nat up. Let's play all the visuals again. थोड़ा उन्हें काप के नहीं उसको खींचे थोड़ा तो खींचे प्लीज हेलीकॉप्टर में जाएंगे, मिलके जाएंगे. राहुल इम्फाल में रहेगा. हेलीकॉप्टर में जाएंगे. Very, very clear that Rahul Gandhi's tour has not been cancelled. Yes, Nishikant ji, continue. Before I go to Mr. Rojesh and Mr. Kipgen. Kartikeya, I have said what I have to say. Now, it's like there's no more time for dialogue and talk. Action needs to be taken. Peace has to be restored. Rule of law has to be enforced. Simple as that. I really don't know what to say, how rule of law needs to be restored. I don't know what to say because, Nishikant ji, I was fortunate enough to meet lot of Kuki delegates, and I was fortunate enough to meet lot of Maiti delegates here. One thing I can say, I was stunned to know that the electricity is not there. You have one... No. It has been restored. No, that's wrong. It was blown off, and it was been for a week. It wasn't there. It's been restored. That's wrong. Firstly. So now let me just play out the bite of Sambit Patra. Let us play out the bite of Sambit Patra. I'm going. आज टीवी चैनलों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं, उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं. बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है. जागरूक होके जाना चाहिए था. सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस. जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए. वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम एक लोकतंत्र हैं. स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें. मगर मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं. राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं. आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है. I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them.
मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सब ने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओस कहते हैं, सीएसओस ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें, मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। मेरा पाइबी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं मणिपुर में, उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इम्फाल में उतरे हवाई अड्डे पर, और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चूड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं, रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं, मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहाँ की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चूड़ाचांदपुर जाएं। और मैं आपको बता दूं, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे मणिपुर में, तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर सर्विस 3 स्थानों पर चालू किया था, चूड़ाचांदपुर जाने और आने के लिए, मोरे जाने और आने के लिए, और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी। मात्र 2500 रुपए कीमत है, 2500 रुपीज पेमेंट करने पर आप चूड़ाचांदपुर जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक द हेलीकॉप्टर टू चूड़ाचांदपुर। इससे सड़क रूट जो है, उस सड़क रूट पे किसी प्रकार की वहां पर गड़बड़ी होने की आशंका है, लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, वो नहीं होगा और यहां वील मेंटेन काम। मगर राहुल गांधी मानते नहीं, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, क्या फायदा हुआ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इम्फाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वाज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। I always say Rahul and responsibility never travel together. Yes, again proved the same today. He should have been more responsive, more sensitive towards the issue of Manipur. जून 13 से 13 जून से अब तक शांति थी, किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है, और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, द सिचुएशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल, लेट्स नॉट फाइट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। जब
सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं है। मुझे इतना ही कहना था और मुझे लगता है चूंकि ये बाइट है और एक बहुत सेंसिटिव विषय पे मैंने अपने विषय को रखा है, हम सब इसको समझेंगे। एक एक शब्द जो हम कहते हैं, it has some effect in Manipur. So we all would be responsible. We all would be responsible citizens of this country. ये अपील मेरे हर कांग्रेसी और हर ऑपोजिशन लीडर से है। Thank you so much.